तो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मैन एंड मोटर्स। और आज टोयोटा ने फिर से मारुति सुजुकी की एक गाड़ी उठाकर उसका नाम चेंज करके रीबैज्ड करके फिर से बेचना चालू करेगी मार्केट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सियाज की। अब से सियाज एक नया नाम और एक नई पहचान के साथ मार्केट में आएगी, टोयोटा के बैजिंग के साथ, और उसका नाम होने वाला है बेल्टा। इट्स लाइक कि जब आप शोरूम में जाओ तो आप ऐसे बोलोगे कि भैया एक बेल्टा का डेल्टा वेरिएंट देना तो जरा। So this comes just a day after a new Toyota grille was spied. The Japanese carmaker has now applied for a trademark of the new Belta, which could be the new rumorous rebadged of Maruti Suzuki Ciaz. This has been made possible due to an agreement that allows both the car makers to share certain models. With that said, Toyota has already rebadged the Maruti Suzuki Baleno and the Brezza in the form of the new Toyota Glanza and the Urban Cruiser. This news comes after a document which has surfaced the intern revealing some details about the new car from the Toyota. So this is the details. जैसा कि आप देख सकते हो, गाड़ी का नाम रखा गया है बेल्टा। तो गाइस सवाल ये उठता है कि क्या ये नया इंजन के साथ आने वाला है या फिर वही पुराना सियाज के इंजन के साथ अपने को मिलने वाला है। तो गाइस मैं बता दूं कि रिपोर्ट के हिसाब से टोयोटा बैज्ड सियाज विल रिटेन द सेम इंजन, द 1.5 लीटर ऑफ K15B पेट्रोल इंजन boosted with Suzuki's SHVS mild hybrid technology. This engine makes 104 bhp and 138 Nm of torque while mated to a 5-speed manual and a 4-speed automatic transmission. Talking about the cosmetic updates, we can expect that everything remains the same. So what about the price and the rivals of this car? So the rebadged version of Maruti Suzuki Ciaz is also expected to replace the existing mid-size sedan from the Toyota, which is the Yaris. Talking about the pricing, the new Toyota badged Ciaz is also expected to be priced slightly premium. So with its launch, the new mid-size sedan will lock its horn against the Honda City and the Hyundai Verna. So that's all for the today, guys. See you in the next video. And if you are new to this channel, make sure to subscribe to never miss the incoming updates.